Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. First word is crispy, crunchy and easily breakable, having a texture that is crisp. क्रिस्पी को हम हिंदी में कुरकुरा कहते हैं, उर्दू में कड़क, तेलुगु में करकरलाडे. For example, the fried chicken had a deliciously crispy coating. Next word is criteria. Standards or rules used for judging or evaluating something. क्राइटेरिया को हम हिंदी में मानदंड कहते हैं, उर्दू में मेयार, तेलुगु में प्रमाणम. For example, the selection criteria for the job included relevant experience and education. Next word is critical, expressing disapproval, having the potential to become disastrous. Critical को हम हिंदी में आलोचनात्मक कहते हैं, उर्दू में मुश्किल, तेलुगु में क्लिष्टమైన. For example, the report presented a critical analysis of the company's financial situation. Next word is criticism, the act of expressing disapproval or judgment, analysis and evaluation of something. क्रिटिसिज्म को हम हिंदी में समीक्षा कहते हैं, उर्दू में तनकीब, तेलुगु में खंडनमु, विमर्शा. For example, the artist welcomed constructive criticism to improve his work. Next word is crook, a dishonest or illegal person, a bend or curve. क्रूक को हम हिंदी में अपराधी कहते हैं, उर्दू में चालबाज, तेलुगु में मोसगाडू. For example, the detective finally caught the crook who had been stealing from the neighborhood. Next word is crowd, a large group of people gathered closely together. Crowd को हम हिंदी में भीड़ कहते हैं, उर्दू में भीड़, तेलुगु में प्रजलू. For example, the concert drew a huge crowd of enthusiastic fans. Next word is crucial, extremely important or necessary, decisive. Crucial को हम हिंदी में महत्वपूर्ण कहते हैं, उर्दू में अहम तरीन, तेलुगु में मुख्यమైన. For example, the information was crucial for making the right decision. Next word is crude, in a natural or raw state, lacking refinement or sophistication. Crude को हम हिंदी में कच्चा कहते हैं, उर्दू में खाम, तेलुगु में स्थूलమైన. For example, the crude sketch captured the essence of artist's vision. Next word is cruel, willfully causing pain or suffering, lacking compassion. Cruel को हम हिंदी में निर्दयी कहते हैं, उर्दू में जालिम, तेलुगु में क्रूरమైన. For example, the treatment of animals in that facility was unnecessarily cruel. Next word is cruise, a voyage or trip on a ship or boat, especially for pleasure. क्रूज़ को हम हिंदी में समुद्र पर्यटन कहते हैं, उर्दू में समंदरी जहाज़, तेलुगु में क्रूइज. For example, they decided to take a cruise to explore different coastal cities. Next word is crumple, to crush or compress something into wrinkles or folds. Crumple को हम हिंदी में टुकड़े टुकड़े करना कहते हैं, उर्दू में ढेर हो जाना, तेलुगु में नलिगिपोయింది. For example, she crumpled the paper and tossed it into the recycling bin. Next word is cryptic, mysterious or obscure, often with a hidden meaning. Cryptic को हम हिंदी में गुप्त कहते हैं, उर्दू में खुफिया, तेलुगु में रहस्यమైన. For example, the message was written in a cryptic code that took hours to decipher. Next word is culminate, to reach the highest point or climax, to conclude or bring to completion. Culminate को हम हिंदी में समाप्त होना कहते हैं, उर्दू में मुकम्मल होना, तेलुगु में अत्युन्नत स्थितिని పొందు. For example, years of hard work culminated in a successful product launch. Next word is cultivate, to prepare and use land for growing crops, to foster the growth of development of something. Cultivate को हम हिंदी में खेती करना कहते हैं, उर्दू में ज़िरात करना, आबाद करना, तेलुगु में पंटలు పండించు. For example, farmers cultivate the fields to yield a bountiful harvest. Next word is cultural, relating to the customs, arts and social institutions of a particular group. Cultural को हम हिंदी में सांस्कृतिक कहते हैं, उर्दू में तहजीबी, तेलुगु में सांस्कृतिका. For example,
The festival showcased the rich cultural heritage of the community. Next word is cumulative. Increasing or growing by accumulation, total और combined. Cumulative को हम हिंदी में जुड़ने वाला कहते हैं, उर्दू में जमा होने वाला, तेलुगु में कूडू कोन्ना. For example, the cumulative effect of small actions led to a significant change. Next word is cunning. Cleverness or skill used for deceitful or dishonest purpose. Cunning को हम हिंदी में चालाक कहते हैं, उर्दू में चालबाज, तेलुगु में कपटमु चालाक्यम. For example, the fox displayed cunning tactics to outwit its pursuers. Next word is curb. A restraint or limit, to control or restrain. कर्ब को हम हिंदी में नियंत्रण रखना कहते हैं, उर्दू में रोकना, तेलुगु में अदपुलो पेट्टू. For example, the city implemented measures to curb pollution and protect the environment. Next word is cure. A remedy or treatment that brings relief or recovery from an ailment. Cure को हम हिंदी में इलाज कहते हैं, उर्दू में इलाज, तेलुगु में आरोग्यानि पुनरुद्धरिंचु. For example, the new medicine proved to be an effective cure for the common cold. Next word is curiosity. A strong desire to know or learn something, inquisitiveness. Curiosity को हम हिंदी में जिज्ञासा कहते हैं, उर्दू में शौक, तेलुगु में आसक्ति. For example, the child's curiosity led to endless questions about the natural world. Next word is curious. Eager to know or learn something strange or unusual. Curious को हम हिंदी में उत्सुक कहते हैं, उर्दू में शौक, तेलुगु में जिज्ञासामयना. For example, the cat was curious about the new object in the room. Next word is currency. The system of money used in a particular country, general acceptance or use. करेंसी को हम हिंदी में मुद्रा कहते हैं, उर्दू में सिक्का, तेलुगु में करेंसी. For example, the dollar is the official currency of the United States. Next word is current. Flowing in a particular direction, happening or existing at the present time. करंट को हम हिंदी में वर्तमान कहते हैं, उर्दू में मौजूदा, तेलुगु में प्रस्तुतम. For example, the river's current was strong, making it difficult to swim against. Next word is curriculum. The subjects and content taught in a school or educational programs. Curriculum को हम हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं, उर्दू में निसाब, तालीम, तेलुगु में पाठ्यक्रममु. For example, the school introduced a new curriculum focused on STEM subjects. Next word is curse. A spoken invocation of harm or misfortune, a cause of harm or misery. कर्ज को हम हिंदी में अभिशाप कहते हैं, उर्दू में लानत, कोंसना, तेलुगु में शापम. For example, the witch cast a curse on the village, bringing about a series of unfortunate events. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.